There are 1 million people in Pakistan and Azad Kashmir who describe themselves as having a visual impairment. These individuals are all around us, yet we often don't see them. Why? Because blind people are often invisible, absent from mainstream society. When seen, they are sometimes overlooked or avoided. Founded in 2000, AKAB School for the Blind is the leading institution dedicated to advancing the lives of the young blind population in Azad Kashmir through identification, education, employment, accessibility, and innovation. Professor Muhammad Ilyas Ayoub, a visually impaired educationist, President AKAB and principal at the school, challenged and dramatically changed society's perception about individuals with disabilities. Today's technology and education create an environment where visual impairment doesn't hold blind people back. The biggest obstacle isn't blindness, it's a world that can't see beyond it. Ilyas Ayoub established a purpose-built school by casting aside stigmas and fears and embracing a new understanding of how to include blind people in our lives for the benefit of everyone. As part of its mission to demystify blindness, AKAB set a goal ahead, from darkness to light, with an objective to reclaim the word blind, so that a person who is blind can describe himself as such freely and proudly. Society's misperception of blindness has led many without sight to feel invisible and marginalized. AKAB continues an evolutionary struggle to bring joy and happiness in the lives of blind people. From an individual to an institution, Professor Ilyas Ayoub remains a source of inspiration for the blind community in this part of the world. Ilyas was born without sight. He began a lifelong journey observing the challenges of living blind in a sighted world. After his basic education in Lahore, Ilyas did his Masters in English Literature, Islamic Studies and Special Education. Today, he is a senior professor at Government College Mirpur, teaching English Literature. In recognition of his great services, he was awarded with Presidential Excellence Award. He has traveled in many parts of the world to meet people, share his experience and to learn from their ideas. अकाब स्कूल में इस वक्त 130 से ज़्यादा बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं, जिनमें से 80 बच्चे जो हैं वो अकामत गुज़ी हैं और बाकी बच्चे जो हैं वो डे स्कॉलर्स हैं। अकाब स्कूल का माहाना ख़र्चा जो है वो 15 लाख के करीब है, जिसमें बच्चों का खाना पीना, बच्चों की रिहाइश, बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप और बाकी जो इनकी तालीमी ज़रूरियात हैं वो इस में शामिल हैं। Around 100 blind girls and boys have passed their matriculation at school. Many of them receiving higher education, some doing jobs in government and private sectors. They are independent individuals supporting their families. हम 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश, फाइनल ईयर है मेरा। 2013 में मैंने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान यहाँ से ही पास किया और अकाब ने ही मुझे जीना सिखाया है। 6 बहन भाई हम ब्लाइंड हैं और 3 बहन भाई जो हैं वो डिसेबल हैं। प्रोफेसर इलियास अयूब साहब ने मैट्रिक के बाद कमिश्नर ऑफिस में एज ए टेलीफोन ऑपरेटर जॉब भी दिलवाई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था सर, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अभी BS ऑनर्स कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। फॉरेक्स में जो है वो ट्रेडिंग का ख्वाहिशमंद हूँ। PSS करने का इरादा है, उसके बाद इंशाल्लाह MPhil भी करना है और उसके बाद PhD का इरादा है।
After AKAB's 17 years long journey, blind community is no more neglected by the government and the society. Today, they are welcomed to receive education in colleges and universities. The intensity of the voice raised for their employment is no more unheard. AKAB is planning to expand the program to other cities. These visually impaired students at AKAB have also proved their skills and excellence in sports. They are part of Pakistan's blind national cricket team. मेरे पीछे आप क्रिकेट का ग्राउंड देख रहे हैं। यहाँ पर लेवलिंग हो रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस ग्राउंड की तामीर मुकम्मल करने में ब्रेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल सत्तार साहब ने और जनाब अमजद साहब ने ये वादा किया है कि वो फंड रेजिंग करके इस ग्राउंड की टोटल जो लागत है, जो तकरीबन 96 लाख रुपए जो है वो आती है, तो उसको वो फराहम करेंगे। In the second phase, an administrative block, a spacious braille library, a beautiful mosque, a wide auditorium and vocational training centers will be built. इस वक्त मैं अकाब स्कूल की हॉस्टल बिल्डिंग के बैक में मौजूद खाई में खड़ा हूँ। ये खाई 2014 में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बन गई थी, जिससे हॉस्टल और किचन की बिल्डिंग को शदीद ख़तरात लाक हो गए थे। इदारा अपने वसाइल से पिछले 3 साल से इस मसले से निमटने की कोशिश कर रहा है और अब भी हंगामी बुनियादों पर एक कंक्रीट की दीवार शुरू की है, जिसकी लेंथ तकरीबन 400 फीट और डेप्थ 10 फुट से लेके 30 फुट तक है। सिर्फ इस दीवार के प्रोजेक्ट के लिए भी इदारे को 6 से 7 मिलियन की रकम दरकार। You can contribute in the efforts for the recognition, education and employment of these tens of thousands of blind children from Pakistan and Kashmir. It's simple. Help us by donating directly to us, or you can pay for a child's annual expenses of £600. You can contact school authorities for technical, vocational or other kind of support. मैं मुल्तमिस हूँ देखने वालों से, सुनने वालों से कि वो आगे बढ़ें और इस कार खैर में दामे दिरमे सुखने कदमे अपना जो है वो हिस्सा डालें। Alone we can do so little. Together we can do so much.